Road trips have always been special for my family, and this time we decided to take this scenic route from Gurgaon to Manali during the chilly month of December. The excitement was in the air as we started our journey early in the morning before 5 am. The aroma of hot tea and the cool morning breeze made the beginning of the trip even more delightful. हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम कुरुक्षेत्र। यहाँ पे 8 बजे पहुँच गए, तो 3 घंटे में लगभग हम लोगों ने 200 किलोमीटर कर लिया है। तो ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया है और ये ट्रिप बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। क्या क्या ऑर्डर किया है, चलो आगे अंदर चल के दिखाता हूँ। The drive from Delhi to Manali has seen a major transformation over the years. Earlier, this journey used to take around 12 to 14 or even more hours, but now it's reduced to roughly 10 hours. One of the most significant changes in the Chandigarh to Manali route is the introduction of 15 to 18 tunnels that have drastically transformed the travel experience. These tunnels not only reduce the journey time by several hours, but also make the drive smoother and less daunting. तो हम लोग पहुंच गए हैं चंडीगढ़। बेसिकली ज़ीरकपुर और एरो सिटी वाले रास्ते पे है, तो ये बाईपास कर देता है। तो पहले हम लोग चंडीगढ़ के अंदर से जाते थे, अब हम लोग ये ज़ीरकपुर वाला रास्ता ले लेते हैं। और रास्ते पर से हम लोग को संतरे ही संतरे दिख रहे थे तो सबसे रहा नहीं गया, तो फाइनली यहाँ पे एक जगह छाँव में हमने लगाया, संतरे का जूस पी रहे हैं और आगे बढ़ते हैं मनाली की तरफ। While technology has made traveling easier, relying completely on Google Maps can sometimes lead to unexpected challenges, especially during events like the recent farmers' protest. As we drove towards Manali, we encountered one such situation. Google Maps directed us onto a route that seemed perfect at first, but a few kilometers in, we realized it was blocked due to a protest. Farmers in the region had gathered on the highway to demand action on their issues, a common occurrence in states like Punjab and Haryana. While such protests are peaceful, they can disrupt traffic for hours or even lead to road closures. Unfortunately, Google Maps hadn't accounted for this and continued to suggest alternative routes through the same blocked highway. So, here are some tips for handling road closures during the protest. You can stay updated before starting your journey, ask locals for guidance if you encounter any roadblocks. Be patient. During such disruptions, patience is key. Avoid trying to rush through restricted areas as it could lead to more delays or complications. While Google Maps is a fantastic tool, real world situations like protests remind us that nothing beats local knowledge and a bit of flexibility when on the road. कितना? वेलकम टू हिमाचल। Earlier, the route involved navigating steep, winding mountain roads that could be both thrilling and nerve wracking. Now, with these modern tunnels, you barely have to climb the mountains. Instead, the road feels more like a highway, straightforward, wide, and safe. Driving through these tunnels is a delight. They are well lit, well maintained, and surrounded by spectacular mountain views on either side. This new infrastructure has made the trip to Manali more accessible and enjoyable, especially for those who previously hesitated due to the challenging terrain. So, whether you are driving or riding, it's a seamless experience that adds to the joy of the journey. Well, the journey was going as planned smooth roads, mesmerizing views, and lively conversations. Just as we were admiring the beauty around us, we were flagged down by traffic cops at a checkpoint.
Slightly puzzled, I rolled down the window only to be informed that I was driving at 67 kilometers per hour, exceeding the speed limit of 60 kilometers per hour. At first, I couldn't help but laugh at how small the margin was, but the officer was very firm and handed me a challan for overspeeding. ओके गाइस, सो 4 टनल पार करने के बाद ये टोल आएगा और इस टोल के जस्ट राइट में है ये एप्पल वैली ढाबा। ये रही अपनी कार। यहाँ पे हम लोग रुके हैं थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट्स और स्नैक्स वगैरह के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे बतानी है। सो इस रास्ते पे आपको स्पीड लिमिट है 60। तो मेरा अभी जस्ट चालान कटा है बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग एट 67 एंड 67 पे कॉप्स वर देयर एंड दे हैड द स्पीड कैमरा। दे क्लिक द फोटो और वो दूर से ही फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। एंड जब गाड़ी आपकी मोमेंटम में होगी, ढलान से आप उतर के आ रहे होगे ना स्पेशली, तो आप वो दूर से ही आपकी फ़ोटो खींच लेंगे। और मैंने पूछा कि मेरी कितनी ऐसी स्पीड थी, मैं तो बहुत स्लो चला रहा था फैमिली के साथ बात करते हुए। तो उन्होंने दिखाया मुझे, तो मेरी स्पीड क्लॉक हो गया 67। तो ऑफिशियल उन्होंने 67 पे उन्होंने चलान काट दिया, बोला कि सर स्पीड लिमिट है। तो अगर आप लोग इस जो कि चंडीगढ़ से मनाली वाला हाईवे है नया, जिसमें टनल्स हैं, तो यार इस पे स्पीड लिमिट मेंटेन करके आओ। अगर आपकी गाड़ी यू हैव क्रूज़ कंट्रोल तो 55-60 के बीच में क्रूज़ लगा के आओ, क्योंकि यार ये लोग थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अभी 67 पे ओवर स्पीडिंग चलान, मुझे भी शर्म आ रही है, बट हाँ रूल्स आर रूल्स, तो कुछ कर नहीं सकते। वी हैड टू पे दैट। तो ध्यान रखो इस रोड पे। बाकी आगे अभी लगभग 170-160 किलोमीटर्स बचे हैं, तो चलो चलते हैं, आगे का रास्ता दिखाते हैं। Despite the initial frustration, we decided to treat it as a part of the adventure. It was a good reminder to be extra cautious, especially in the mountains, where speed limits are enforced not just for your safety but to allow you to fully enjoy the journey without rushing. The incident became a light-hearted story to share as we continued on our way, now paying closer attention to the speedometer. So, is December a good time to visit Manali? So, December is definitely a popular time to visit Manali, but it's important to set the right expectations. During our trip, we found that snowfall in Manali itself was minimal, almost zero, contrary to the snowy wonderland many imagine. However, the freezing temperatures made up for it, with the mercury dropping to -2 degrees at night in Manali and going as low as -6 degrees Celsius in higher altitudes beyond the town, like Chispa. So if you're dreaming of visiting high mountain passes, December might not be the ideal month. Most high altitude passes, including Rohtang Pass, are closed for the winter season, and the Leh-Manali highway is inaccessible beyond Chispa due to heavy snowfall and black ice formations on the road. These closures are necessary for safety, as driving on these roads in such condition is extremely risky. So what to expect in December? So while you may not witness heavy snowfall in Manali itself, December offers a unique charm. Chilly hill station vibes, the cold weather, cozy bonfires and the sight of frost-covered landscapes create a serene atmosphere. Snow activities beyond Manali. Head to Solang Valley or the area near Atal Tunnel for snow sports and scenic beauty where snow from earlier months still lingers. Mountain adventures. Short treks, hot water springs at Vashisht and scenic drives gives you plenty to explore. So here are some tips for December travelers. Dress warm. Carry heavy winter jackets, thermals, woolen caps, gloves and waterproof boots to stay comfortable in freezing temperatures. Plan around road closures. Research in advance about routes and passes that are accessible during the season. Adjust expectations. Don't come solely for fresh snowfall. Instead, enjoy the peaceful beauty of the hill station and its surroundings. Explore activities. From paragliding in Solang Valley to exploring local markets and temples, there's no shortage of things to do despite limited snowfall. So, December in Manali may not promise heavy snow, but it's still a fantastic time to soak in the chilly mountain vibes, experience a peaceful winter getaway, and enjoy all the charming hill station has to offer. In our upcoming videos, we will take you on a journey through all these exciting activities and hidden gems of this beautiful hill station.
We'll also guide you through the scenic routes, share travel tips, and give you a glimpse of the serene temples, bustling markets, and breathtaking views that make Manali a must visit destination. So don't miss out. Watch this complete series and experience the magic of Manali with us, one adventure at a time. गाइस मेरे पीछे है द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ कुल्लू। ये देखो। तो अभी हमने एक लंच ब्रेक लिया है और जस्ट 40 किलोमीटर्स रह गए हमारे होटल के लिए। टाइम हो रहा है 3 बज गए हैं। तो 3 बजे हम कुल्लू टच कर गए थे और मौसम अब धीरे धीरे हल्का हल्का ठंडा हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्लेजेंट है। और हम लोग इस ढाबे पे आए हैं, ये देखो। तो ये ढाबा है अन्नपूर्णा ढाबा और ये अपनी कार, यहाँ से हम लोग आए हैं। और इसके व्यूज़ वैसे तो आपने मेरे पीछे देख लिए होंगे, बट मैं अंदर चल के इसके असली व्यूज़ दिखाता हूँ। तो ये वो ढाबा है जहाँ हम अभी रुके हैं लंच करने, और इसका व्यू देखो आप। ये देखो, बहुत ही प्यारा। हे गाइस, सो इट्स 5 PM एंड फाइनली पहुंच गए मनाली। तो हम लोग का स्टे है होटल हाईलैंड, और बताऊंगा मैं इसके बारे में। ये लॉग हट्स रोड पे है, मॉल रोड से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर। तो ये ब्लॉग कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहूँगा। एंड अभी तो पूरा मनाली और आगे घूमना है हमें, तो वो सब भी देखना है। और अगर कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे हम लोग को फॉलो कर लो लाइव अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रॉम मनाली।